जो आपका गाना है किसी डिस्को में जाए में कितनी बार है? Really? आपको जरूर कोई संजीवनी बूटी मिली है, आपकी त्वचा से उम्र का पता नहीं चल रहा। I think जब आप अंदर से खूबसूरत हैं, वो ऑटोमेटिकली बाहर खूबसूरती दिखती है। Like going on stage and I have to walk on stage with these really high heels. मैं एकदम measure करके slowly जाती हूँ। लोग सोचते हैं वाह क्या elegantly walk कर रही है, नहीं डर रही हूँ कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। Okay, लेकिन घर में कभी गिरते हैं आप? नहीं मैं इतनी गिरी भी नहीं। एके hashtag super मेहनती लड़का. You do have to kiss the frogs till you meet your prince. That is there. Who's the frog? I'm so interested in knowing that. A lot of girls think so. I want to get married because it's so much fun to get married. मेहंदी लगाएंगे, ये करेंगे, dresses पहनेंगे, cocktails. It's not. It's a huge commitment. So take your time, find the right person, spend time with that person first, get to know the person, and then think that yes, this is the person that I want to grow old with. बहुत गिरे हुए हो तुम, बहुत गिरे हुए। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन एंड आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी ज्ञान में, और देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए फिल्मी ज्ञान, क्योंकि यहाँ मिलती है खबर तपातप और फटाफट और मिर्च मसाला के साथ। रवीना टंडन का खास अंदाज आपको एपिसोड 2 में नजर आएगा, और सबसे कमाल की बात यह है कि मैं खुद उनके गानों पर नाच कर बड़ा हुआ हूं, और ये एपिसोड उनके घर पर शूट हुआ है। वी यूजुअली शूट इन आवर ऑफिस, बट दिस टाइम रणदीप का जो एपिसोड था वो उनके ऑफिस में हुआ था, और साथ साथ जो है इनका एपिसोड हमने उनके घर पे शूट किया था। अब कमाल बात यह है कि रवीना ऑफ स्क्रीन बहुत अलग पर्सनैलिटी है, दिल से बात की है पॉडकास्ट में। बस सपोर्ट चाहते हैं और साथ साथ यू शुड जस्ट सब्सक्राइब फिल्मी ज्ञान। विल बी टचिंग 1 मिलियन वेरी सून। बाकी आप एपिसोड का आनंद लेते रहिए ऑन योन फिल्मी ज्ञान। ये डिटॉक्स का सीजन 2। एक हसीना नाम रवीना। आई एम अर्सी आदि वेलकमिंग यू टू I love it. Detox, how are you? I am very good and I love the show's name also, Detox. Yes. That's our agenda, by the way. But रवीना जी, when I was coming कार से आज, मैं पूरे कार के जरिए 1 घंटे का जो मैंने रास्ता तय किया है, सिर्फ रवीना सॉन्ग सुनते हूँ। That's what I do. It's just lovely. सबसे पहला सवाल, जो आपका गाना है किसी डिस्को में जाए में कितनी बार है? Really? Because at least 6 to 8 बार. बहुत बार. It's like 1,000 times. Because every time there's expression that they've changed. And that's how this full song was made. Tell me, how different person have you become now? Because of course, OTT पे हैट्रिक है आपकी, पहली बात तो कमाल, मजे आ गए हैं, और इस हैट्रिक के बाद बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो हैं ढेर हो गई हैं, है ना? तो how are you feeling on that? उनके ढेर होने से आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, बिकॉज आई फील सबको खुश होना चाहिए, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर द इंडस्ट्री के एवरीवन इज डूइंग सो वेल एंड एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज डूइंग गुड वर्क, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट बिसाइड्स द वर्क बीइंग अप्रिशिएटेड। लेकिन हाँ, जहाँ तक के हैट्रिक का सवाल है, एंड जहाँ तक के बैक टू बैक लकीली ऑल दी OTT सक्सेसेस हैव बीन, एंड देन KGF 2 came in the middle, and now there'll be another film release in the middle, so I think it's been a good time. It's been a good time. जहाँ तक मुझे पता है, you're not fond of gossip magazines. I was just going No, through a I'm lot not of... at all fond of gossip magazines because I think they write crap. Tell me your things, no? But those gossip magazines have only died. Now it's all on social media. There's nothing like gossip magazines anymore, really. But there were days when you were shooting, people wrote a lot about you. 2 magazines came out at the same time. You were discussing about this in one of the recent interviews, that one was telling how I fall sick, A to Z, कैसे हुआ. दूसरी ने बात की कि जहर खा लिया and she's trying, मर गई। तो वो तो बहुत ही हमने फेस किया है उस जमाने में, येलो जर्नलिज्म जिसे बोलते थे, एंड स्ट्रेंजली बहुत सारी ऐसी विमेन एडिटर्स थी who would actually love to bring another woman down, so it was a sad situation. बट अब मैं उसी दिन सोच रही थी कि वो है कहाँ सारी, अब वो बहुत विमेन्स लिप का नकाब पहन के घूमती हैं, बट कोई बात नहीं, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं. यू हैव बी पोलिटिकली करेक्ट, देयर इज नो बॉडी शेमिंग एनी मोर, देयर इज नो काइंड ऑफ
impolite things that you can really say. Luckily, तो वो तो जी नहीं पाती ऐसे जमाने में. I don't know how they would have survived. I do agree that new actresses जो अभी आ रही हैं, बन रही हैं, पेशेंस लेवल जो है थोड़ा सा कम है और a lot of programming they are being done through, because उस समय तो नहीं होता था. ऑन शूट हमें पता चलता था कैसे रिएक्ट करना है, कैसे समझना है. हमको सीन तो शूट पे ही मिलता था और कभी कभी तो हम लोग शूट के लिए बैठे हुए हैं और सीन लिखा जा रहा है वहां साइड में. तो ऐसा भी हुआ है. सो देयर वाज नो प्रेपरेशन और देयर वाज नो लाइक वर्कशॉप्स और एनीथिंग लाइक दैट. It would be all spontaneous. And I think that is how I'm used to even now working. Even though I feel there are rehearsals and there are workshops and this and that, but I as an actor, मेरे से कुछ ज्यादा ही rehearsals कराओ ना मैं stale हो जाती हूँ. I prefer to be spontaneous. वो जो spontaneous एक निकलता है पूरा सब, you know, that instant reaction that one gets. I prefer that. Thunder Thighs is something which I really... TT. TT. Dabu still calls me TT, Dabu Ratnani. You have got a thunder thigh right now, right? आपको चोट लगी है? हाँ, so but that cannot be. That is fallen down thunder. That is not. But not on my thighs. I'm thunder knees right now. Knees. My knees are totally scraped. For Yeah. the Gossip magazine. Yeah. Knees. My knees are totally gone right now. What happened? क्या हुआ? Nothing. I have just. It's very non-glamorous. Please, I cannot talk about how I fell down on my shoot. So. very non-glamorous. We were all running और वहाँ बहुत पत्थर थे तो गिर गए और क्या हुआ. Okay. लेकिन घर में कभी गिरते हैं आप? नहीं मैं इतनी गिरी भी नहीं. No यार, ऐसा कैसे हो सकता है जब कभी फिसले नहीं घर में? You know, as an adult, honestly, मैं गिरी नहीं हूँ. ये that too because it was like action and we are shooting like the action sequences and running and this and that and धूल and storm fan and helicopter. तो वो गिरने का था तो मैं नी पैड्स नहीं पहनी हुई थी और मेरे नी स्क्रैप हो गए. But otherwise no, in reality no, I have not fallen really. Touch wood so far. I'm very careful. मेरी in fact एक fright है, you know, एक सबको एक कुछ paranoia होता है ना, एक fright होता है. मुझे always ये है कि मैं कुछ लंबा सा गाउन या कुछ साड़ी वाड़ी पहनी और मैं heels पहनी हूँ और मैं अवार्ड लेने जा रही हूँ और मैं स्टेज पे गिर गई. मेरा ये always inherent, I think बचपन से ही fear रहा है. And touch wood, that's why I'm even more careful when I'm like going on stage and I have to walk on stage with these really high heels. मैं एकदम measure करके slowly जाती हूँ. लोग सोचते हैं वाह क्या elegantly walk कर रही है. नहीं, डर रही हूँ कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ. That's the difference. But Kajol is pro in that. वो तो गिर जाती है. Oh really? I haven't seen, poor thing. Yeah, but I haven't seen that. But I have that fear कि I'll be going to collect an award or something and मेरा heel और वो फंस जाएगा और मैं गिर जाऊंगी सीढ़ी पे. It happens with me a lot of times whenever I'm going somewhere, even in taking showers at my home only, मैं वहाँ पे फिसल के गिर जाता हूँ. फिर I'm like okay wait. बहुत गिरे हुए हो तुम, बहुत गिरे हुए. Just call me गिरा हुआ on camera. But I want to know, ऐसी चीजें ना मीडिया के लिए बहुत क्लिक बेट होती हैं. रवीना गिरी स्टेज से धाड़ धाड़. How do you see this? देखा ना, इसलिए लकीली अब तक नहीं गिरी हूँ. नजर मत लगाओ अभी, नजर उतार दो, कभी नहीं गिरूंगी मैं. वंडरफुल. इंडस्ट्री में बदलाव बहुत आए एंड बदलाव के साथ साथ बहुत सारे गाने भी आ गए हैं. बट आई मिस योर सॉन्ग्स. आई विल बी ऑनेस्ट, सॉरी टू से गाइज, आई लव यू ऑल. इट्स नॉट लाइक दैट. ऑफ कोर्स व्हेन यू विल बी सिटिंग विद मी आई विल डू द सेम मे बी. बट आई वांट टू से तू चीज बड़ी है मस्त मस्त से लेकर हर एक गाना इतना दमदार. डू यू मिस दैट एरा ऑफ बॉलीवुड वेयर डांसर्स आर कमिंग पहाड़ियों के पीछे से, हेलीकॉप्टर से, यू नो, कार निकलते डांसर आ गए हैं रंग बिरंगे कपड़ों में, दे आर डूइंग स्टेप्स. या आई थिंक दैट वाज फन. बहुत मजेदार होता था वो भी. लेकिन हाँ, आई मिस माई सॉन्ग्स एंड डांसिंग एंड स्टफ. आई वुड लव टू डू ऑल दैट अगेन. लेकिन आई थिंक हर एक स्टेज के साथ एक एवोल्यूशन होता है. यू मस्ट इवॉल्व विथ एवरीथिंग एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड नाउ. सो द एवोल्यूशन हैज हैपेंड. सो इट्स अ गुड एवोल्यूशन. इट्स नॉट कि अरे हम मिस कर रहे हैं. मेलोडीज अभी भी हैं, अच्छे गाने अभी भी हैं, म्यूजिक इज टेरिफिक दीज डेज. सो इट्स जस्ट अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग. यस. गोविंदा जी एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी आप तारीफ करते कभी नहीं थकते. और आप हमेशा कहते हैं कि मैं जब भी उनको एक्टिंग करते देखती थी उस समय, आई यूज्ड टू बी लाइक मैन हाउ कम ही इज डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क. एंड पता ही नहीं चलता था वो एक ही सीन में हंसा रुला दोनों सकते थे. एग्जैक्टली. डू यू अग्री दैट बॉलीवुड इज नॉट गिविंग हिम वर्क नाउ और देयर समथिंग हैपनिंग बिटवीन गोविंद एंड बॉलीवुड?
Well, I think that's completely his decision and his call. I think opportunities सबके लिए होती हैं. It's not कि इनको नहीं मिली या उसको नहीं मिली. That will be being unfair to my industry, because I think ये industry ने हम सबको प्यार, काम, शोहरत सब कुछ दिया है. You know, so one cannot be ungrateful to that. So it's not that the industry is not giving it. I think it's every actor's and every individual's decision on their own कि वो किस तरीके से अपना करियर लेके जाते हैं आगे. So I think maybe what he's waiting for, he's not happy with what he's getting. Maybe one day he will do something which he thinks, okay, I'm happy. I also waited for so long to do. I said no to so many things पीछे. And then ultimately I did something that I said, okay, this is something I would like to do. So to each his own, honestly. Do you agree that your heroine अब थोड़ी बुजुर्ग हो गई है, अब you have come to roles जो बहुत serious हैं, you have come to roles which will be changing the mentality and thinking process of the audience. So I believe Sushmita is also doing the same. She's choosing work जो impactful रहे. तो is it a process for an actress or actor कि starting में we can do some commercial work, we can be heroine, we can dance, we can do everything we want, but धीरे धीरे जैसे age होती है we choose some work जो impactful रहे. See, I always said that I will do roles which suit my age and I can do with grace and with respect. I have never fooled myself कि okay, I am going to now suddenly start playing someone who's going to college. No, you cannot do that. You have to evolve with age, and you cannot even be, you know, seen doing that. And honestly, I actually have played Buzurg when I was not Buzurg. You know, in Daman, I actually played Shan's mother-in-law. Yeah. When I was, I think, this was the year 2000, 2001. I don't remember how old I was then, but it was, I was playing a much older person, like a 50, 60-year-old when I think I was 23, 24. You know, something like that. So it's that what you do as an actor. And I had started choosing these kind of roles, mature roles, which I think was right from Satta, from Aks, from Ghulam-e-Mustafa, from Daman, from Matra to Jago. So I had kind of made that shift long time ago. It is not now. I started doing that then. Ji, how do you define love, Raveena ji? Because of course we at this age, I'm still very young. I see love nowadays is like left, right, not matched. This is how the love is being defined now. There are blind dates nowadays happening, and it's a threat for the world, I believe, because people go for blind dates and उनके पैसे वैसे सब ले लिए जाते हैं, फिर वो घर आते हैं कि हाय हाय कबूतर ही अच्छे थे, इससे अच्छा तो. So I want to know your definition of love, because of course with the passage of time you were in love, you got things up, a breakup हुए, patch up हुए, तमाम चीजें हर किसी के साथ हो. It's very common. I want to know, how do you define love now? Well, it's definitely a journey. Depends. You do have to kiss the frogs till you meet your prince. That is there. Who's the frog? I'm so interested in knowing that. But nonetheless, you do. I mean, it is something that every relationship cannot work out. And it's not that the first relationship you have, oh, this is the man or this is the woman I'm going to marry. Sometimes things work out. Sometimes things don't work out. And you date, you get to know each other, and then you feel where it is going. And then later on, of course, it does become into a strong companionship, friendship, whatever. Yeah. So that is where I think, for me, love stands. It's not a definite term. Love keeps changing into every stage of the relationship that you're in. It could be a different kind of love for every stage of the life's journey that you have with your partner. Okay, so what guidance you'll be giving to Rasha on love? Right now, focus on your career, focus on your studies. That's it. That's it. Yeah. I thought you'll be saying something, don't kiss a lot of frogs. Just find the prince directly, something like that. I don't think that's humanly possible. So one has to be practical. And in fact, I do believe, I tell everyone that don't hurry into every relationship. And I'll be saying that same thing to my daughter as well. Take your time. Don't hurry into everything.
There's no rush. A lot of girls think, so I want to get married because it's so much fun to get married. मेहंदी लगाएंगे, ये करेंगे, dresses पहनेंगे, cocktails. It's not. It's a huge commitment. So take your time, find the right person, spend time with that person first, get to know the person, and then think that yes, this is the person that I want to grow old with and I want to die with. Then you get into the marriage mode. बट कभी ऐसा होता है कि राशा आपके साथ बैठती है, वो क्योंकि ऑफ कोर्स हम अपने मम्मी पापा की पुरानी चीजें जानते हैं. आई रिमेंबर इवन आई आस्क्ड माय मदर दैट हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स यू वर हैविंग व्हेन यू वर इन स्कूल कॉलेज, लाइक व्हाट वाज लव इन दैट टाइम. तो एवर डिस्कस दिस थिंग्स? I think my children, I have discussed my life very openly with them, because there are times when you discuss your life, they should learn from your mistakes as well, so that they don't make the same mistakes. But everyone's life is different. They might make different kind of mistakes. But as long as they learn positively from that mistake, I would want them to make that mistake. So all the time I'm not going to be there to protect them from that. Because I feel life is the biggest learner. What you can learn from life's experiences, no one can teach you. You have to go through it yourself. So whether it's a pain of a heartbreak, or it is the pain of a betrayal, or it is the pain of anything that you go through emotionally as well, one becomes stronger after going through that. You'll become stronger and you'll realize and recognize your own inner strength. So it's very, very necessary to fall sometimes. तो जहाँ तक कि राशा रणबीर एंड मेरे दोनों बाकी लड़कियों का भी, सब बच्चों का सवाल है, मैं यही उनको बोलती रहती हूँ कि लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, बट देन वी डिस्कस वेरी ओपनली अबाउट रिलेशनशिप्स एंड हाउ one should always try to do the good thing and the right thing. मम्मी कैसी हैं आप? स्ट्रिक्ट हैं या थोड़ा चलो माफ किया? ये तो बच्चों से पूछना पड़ेगा. नो, आई एम क्वाइट देयर फ्रेंड जब बनना पड़ता है. चाहे रणबीर को फुटबॉल के लिए जाना है या मैचेस के लिए जाना है तो मैं ही हूँ साथ में, और जहाँ राशा को कॉन्सर्ट्स के लिए जाना है इधर उधर चाहे जो भी है वो भी मैं साथ में हूँ. I took Ranbir to FIFA. I've taken him to Manchester United. I've taken him to IPL matches. I've taken him to the other cricket matches, T20s. I've taken Rasha for now Shawn Mendes, then Taylor Swift and Doja Cat. I've taken her to all these concerts. I तो wish you were my mother. दोनों का अलग I would have explored everything. तो दोनों के अलग अलग टेस्ट हैं, but I am there with them. And then राशा और मैं तो भाग जाते हैं जंगल. कभी कभी हम लोग मंदिर चले जाते हैं, कभी कभी हम लोग जंगल चले जाते हैं. तो Rasha and me love exploring life that way. रणबीर अभी अपने 10th standard के बोर्ड्स दे रहे हैं, so this year he is busy. But जैसे ही बोर्ड्स खत्म होंगे तो वो भी चलेंगे साथ. आएंगे फिर. हाँ, है ना कि कहाँ जाए. फिर स्टार्टेड. बट रवीना जी, यू रिमेंबर द ट्रीटमेंट जब पहले मिलता था व्हेन यू वर न्यू टू द इंडस्ट्री? वहाँ थोड़ा कम मिलता है आजकल. तो ऑफ कोर्स यू आर रवीना टंडन नाउ, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल. यू हैव सेड कि आज दिन है तो पीपल से कि दिन ही है आज, तो डू यू एग्री कि वो ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस आया है लोगों के? ऑफ कोर्स यू हैव वर्कड सो हार्ड टू गेट दिस ऑल डन, बट हाउ वाज योर रिएक्शन दैट टाइम जब लोग नहीं समझ पाते थे दैट आई एम अ गुड एक्ट्रेस, कम ऑन, यू हैव टू पे सम अटेंशन टू मी? Well, it's a struggle in everyone's career. जब तक आप जहाँ आप बिगनर हो और जहाँ तक फिर आप जिस मुकाम तक पहुंच जाते हो, तो स्ट्रगल तो सबके लिए होता है. ये मेरी इंडस्ट्री में नहीं, सबकी इंडस्ट्री में. चाहे आप जूनियर पायलट से स्टार्ट करो या आप जूनियर एक ऑफिस में से स्टार्ट करो और फिर जहाँ तक आप पहुंचो, तो वो तो सबकी जिंदगी में होता है. बट मेहनत इज समथिंग दैट टेक्स यू वेयर यू अल्टीमेटली वांट टू बी एट. सो मेहनत करते जाओ, लगन से काम करते जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता. कभी ऐसे घर में आप टिप टिप बरसा पानी पे डांस करते हैं खुद? हाँ, जबी सिली आंसर आई वाज गोइंग टू गिव, बट इट्स ओके. नो, यू वर सपोज्ड टू कम ऑन रवीना जी, व्हाट इज दिस? यू कंट्रोल्ड योर टंग. मैं बोलने वाली थी जब बीएमसी का पानी बंद हो जाता है तब मैं शावर खोल के बोलती हूँ टिप टिप बरसा पानी, पर अपने आप पानी वाले से रखता है. बट दैट वाज सच अ स्टूपिड आंसर. बट नो, nonetheless, no, I've never danced on tip tip in my house. You regret dancing? हर पार्टी पे सब लोग मुझे खींचते हैं डांस करने के लिए. उस नंबर पे पूछ लो, ये दोनों जो बैठी हैं इधर, ये खींचते रहते हैं. वो तो अपने फोन में ही लगी रहती है, उसको पता भी नहीं मैं क्या बोल रही हूँ. कोई बात नहीं, देखा पूरा चला गया, लेकिन वो अपने मगन में. I know. बेचारी. So you hate that song now? Is that? No, I love that song. It's one of my favorites. I think it became a bigger hit After then Tu Cheez Badi Mast Mast. Now earlier it was all about Tu Cheez Badi Mast Mast. Now it became a big cult song.
Wonderful it is. So we have a segment in which I'll be naming the comments that you get on your Insta post. Of Oh, course, I'm God. filming and comments and hashtag is my dhanda pani. So going ahead with the very first comment, mother looks beautiful than daughter. It's a comment जो आपकी और आशा की post पे आए थे. How will you be reacting on that? Well, I think as far as every mother is concerned, she always wants her daughter to be better and bigger than her, and always. And as far as when I see Rasha, she's still a baby. I have reached that maturity in what I know, what I need to wear, what I need to do with myself. So every person has that evolution. And as far as she's concerned, the kind of dancer she is, the kind of performer she is, the kind of entertainer that she is with her talent, she's 100 times much better than what I ever was when I started off. Like when we are sitting and watching a dance, like my friends like Farah or Sanju or someone, they say, my God, look at her dance. She dances 100 times better than you. I said, मैं सबको यही बोलती हूँ. तो Farah तो straight बोलती है ना, Tandan, this one's so better than you, 100 times better than you. So it's like, you know, it's something that you always want your children to be. दूसरा कमेंट, रवीना जी, आपको जरूर कोई संजीवनी बूटी मिली है, आपकी त्वचा से उम्र का पता नहीं चल रहा. आई थिंक जब आप अंदर से खूबसूरत हैं, वो ऑटोमेटिकली बाहर खूबसूरती दिखती है. So, उनकी डीपी पे क्लिक किया जाए, देखा जाए कि वो कितने खूबसूरत दिखते हैं, तो पता चलेगा वो कितने खूबसूरत है अंदर से. ओके, वंडरफुल. सब रोस्टेड. आई बिलीव यू आर फन पर्सन टू बी अराउंड. आई ट्राई टू बी. आई डोंट नो इफ आई एम. नहीं हुआ. आजकल तो बहुत जिप अप करना पड़ता है, क्योंकि आजकल तो जोक भी अलग तरीके से ले लेते हैं लोग यार. कोई कभी कभी we are going through the same. yeah, like a normal joke also, if you have to do, which is actually funny and you're not meaning it in bad intention, वो बैठे हैं 10 एनालाइज करने के लिए. उसने सेंटेंस में एक्चुअली ये कहने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं कह रही थी, उसने ये कहने की कोशिश की. तो वो ज्यादा जानते हैं कि आप क्या कहने की कोशिश करें आपसे ज्यादा, है ना. So true. तो वो आज कठिनाई है आजकल. तो देयर इज अ सेगमेंट कॉल्ड हैशटैग शो इन विच आई विल बी नेमिंग द एक्टर्स. आपको जो भी हैशटैग आए मन में, उनको सोचकर, देखकर, जानकर, पहचान कर, यू हैव टू नेम देम. गोविंदा. Oh, I have to say hashtag. हाँ, लास्ट 5 मिनट समथिंग. हाँ, okay. You said Govinda. हाँ, गोविंदा. Super actor. Hashtag super actor. वंडरफुल. सुनील शेट्टी. Action hero. हैशटैग एक्शन हीरो. Hashtag action hero. संजय दत्त. Hashtag funny friend. Oh, is he funny? Oh, he's very funny. He looks very serious. Yeah, he just keeps making you laugh. हाँ, आए तो छोड़ो, डर लगता है मुझे. एक I once took his interview. It was, I asked him this question called, do you love watching Punjabi films? And he's like, yeah, I'm a Punjabi. Khatam. The interview ended there. It was a 3-second bite, and I made it a meme and posted. That went viral. Okay, Salman Khan. Hashtag first hero. Yeah. Shahrukh Khan. Hashtag wanna work with forever. आय हाय, वाह, लड़की शहर की. AK. Hashtag super मेहनती लड़का. ऋषि कपूर. Hashtag my first crush. How's Ranbir doing? How did you see the journey he has got? I think he's of course already established himself as one of our superstars now. Yes. So it's not that we have to wait for another few more years to say that. So if you'll ask me Ranbir Kapoor ka hashtag, I'll say superstar. Hashtag superstar. And Ravina के लिए? Ravina के लिए hashtag many miles to go. You're still on that process of learning and achieving a lot. You don't. I think that never ends. The day you feel you've learnt everything, it ends there. So always be a student and always keep learning. Every day is a new chapter. Every day is a new lesson. Wow. How do you see the rejections which were there? And nowadays, not only rejection, there are, this Chugli gang is also working very aggressively. They talk about this, that and that. So, of course, you must be aware people talking about you behind.
So अरे वो तो पहले के किस्से हैं. You reach my age ना, you won't even bother. You be like, I'm not interested. Because you have to have confidence in yourself, na? You know what you are, and you know what you've achieved, and you know where you've reached. तो जलते वाले तो जलते ही रहेंगे. ठीक है. So I'm going through a breakup. Unfortunately, I don't know what it is. It's complicated only. So what would be your guidance to all people who are going through one, and to me at the same time? You'll hurt like hell right now. Yeah. Probably. You're hurting like crazy. But 6 months down the line, you look back and you'll say, oh my God, thank God, was I really crying for that person? Yay, I'm out of that. So just enjoy it. And if you think the person's really worth it, if that person was meant to be, and if he values you, he'll come back to you. But if he doesn't, then it's his loss. I love this answer because I do the same. When somebody don't talk to me, I'm like, your loss. That was it. It was lovely podcast. I believe how much the time we have rolled on? कितना किया हमने? 25. 5 मिनट और खींच लेते, 30 कर लेते. So रवीना जी, घर में जो चीज़ें होती हैं, है ना, बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव टेकन अ लॉट टाइम टू सेट आवर होम. हम सबके सपने होते हैं. आई रिमेंबर योर टाइम व्हेन यू सेड कि मैं, है ना, सेंटा क्रूज टू जुहू टू सेंटा क्रूज में बहुत कम पैसे में जाती थी. आई वांट टू नो दैट स्टोरी टू दिस स्टोरी वेयर यू हैव योर ओन होम, चीज़ें मैनेज की, खुद बनाई. So, honestly, I think everyone sees ups and downs in lives. And when I was born, actually, we lived in a single bedroom apartment in Juhu itself. And then when I think I was 3 years old, my dad moved into the bungalow, which he bought with his earnings, and his films did well. And then again, we saw a complete downfall in Papa's career as well, and in our finances as well. And in those days, everyone was not so investment savvy. Nowadays, there's so many things. In those days, everyone was just making a living out of what they were getting mostly. You know, films were like that. So many people also owed money to my dad where they didn't end up paying him. So there was a point where we were financially also very low. And my dad's career was also not doing so well. But then again, we saw a high. You know, so it's always, everyone's life has these highs and lows. So when I, with my earnings, bought my first ever apartment, I made a apartment in Andheri. And that was a beautiful house, of course. And then immediately after that, I got married. And then Anil and I made this house together, where we are right now in. So how do you decide each and single thing which you get to home? कि ये इधर place होगी, उधर place होगी. आपका से ज़्यादा रहता है, I believe. Or is it like, okay? Well, I think ultimately it's the wife that makes the home. It's the women of the house that make a home. Men only like their, you know, appliances कि मेरा ये इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए. फिर तुम लोग हाथ मत लगाना. बस हम लोग उनकी चीजों को हाथ नहीं लगाते. Otherwise, we are free to do what we want in our own house. So that's something which I think ultimately women run a house. ठीक है. So I call this casting couch. I call this what couch? I call this manifesting couch. कोई frame में आ रहा. We are just taking last question and wishes. Yes. So we call this manifesting couch. तुम्हारे बहुत सारे thoughts जा रहे हैं तुम्हारे दिमाग में. Not done, not done. हाँ ना. It's Ravina. तुम बहुत naughty हो. That's what people say. I wish वो भी बोलते हैं anyway. So manifesting couch मैं इसको बोलता हूँ. 3 wishes I want you make today, and we'll cross and we'll ask people to manifest for you that वो पूरी हों. 3 इच्छाएं. Would you have met anyone who feels that they're actually content with what they have and don't want to manifest anymore? Is it you? I just met. Yeah, you just met. No, okay. So I'll make it simple. Okay, my cat was not well since morning. So please manifest that she becomes okay in a day. Okay, thank you. Obviously, both the children have their exams and their exams of life. Mummy vibes. So full on mummy vibes. Tathastu. Tathastu. And you'll have already made Patna Shukla a hit. Yes. Now just manifest that all the awards come to me again this year after Aranyak and Karma calling. Tathastu. Correct. Then I'll be waiting for the party you'll be throwing after you get all the You awards. are on, darling. You're on. First come for the success party that's happening soon.
Then we'll do the awards party. Works. Okay? Works? Thank you so much. So Your nice to message- meet you. So lovely. Your message to Janata, because they want to see you more and more on Filmy Gyan. Because I texted you and she's like, I am replying you. This is the number. Talk to him. So your message will be touching 1 million over YouTube, and we're already 23 millions over our Filmy Gyan Instagram. And you love that. We love you. नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन एंड आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी ज्ञान में, और देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए फिल्मी ज्ञान, क्योंकि यहाँ मिलती है खबर तपातप और फटाफट और मिर्च मसाला के साथ. Thank you so much. मेरे साथ क्या हो सकता है?